Hi guys, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं one of the most requested perfume review करने वाली हूँ and these perfumes are the discovery sets of Wearified and इतने सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि रिव्यू वेरीफाई स्पेशली द डिस्कवरी सेट फॉर हर like all the women out there who were requesting for this video is specially for you. I hope कि आपको ये review पसंद आएगा and you enjoy watching the video. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So before I even begin with the packaging and everything, just want to mention that Wearified is a brand from a fellow YouTuber and her name is Anam, and she has a website called as Wearified. So she has created a couple of products. I have already bought Wearified lipsticks and I absolutely loved the quality. And then she came up with some powders and stuff like that, makeup related stuff, and finally she has come out with her fragrances, and that's what we are going to focus on today's video. So these are basically called as discovery sets and they are travel mini sets for her and him. These are the discovery sets. एक हिम के लिए है, एक हर के लिए है. मैं इनमें से कोई एक का पैकेजिंग आपको अच्छे से डिटेल में दिखा देती हूँ एंड देन हम सीधे जंप करेंगे परफ्यूम्स पे. So the travel mini set comes in a package like this. All her bottles and everything have that ombre effect का theme going on across all the bottles. Of course these are the mini travel size bottles, तो इसके पैकेजिंग में वो ombre effect नहीं है, बट जो ओरिजिनल 100 ml की बॉटल्स हैं उनमें सब में ombre effect है. तो इन्होंने वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करी है अपने डिस्कवरी सेट के साथ. दे हैव दिस ombre effect going on and the Wearified logo. I love Wearified logo, it is so cute. So this is the Wearified logo and the details here. और पीछे की तरफ जितने भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है. अब इसमें 10 ml के 3 बॉटल्स हैं, तो आपको टोटल 30 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है एंड 30 ml का प्रोडक्ट मिल रहा है 599 रुपीज़ में. तो आप कंसिडर कर सकते हो कि 200 रुपये का एक टेस्टर 10 ml का आपको ट्रैवल मिनी साइज़ का बॉटल मिल रहा है. ओपन करने पे डिस्कवरी सेट कुछ इस तरीके से दिखता है. कार्डबोर्ड बॉक्स में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं एंड ये आपका खोल के दिस इज़ हाउ द मिनी सेट इज़ सिटिंग इनसाइड. बॉटल्स आर सिटिंग इनसाइड. काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है क्योंकि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बॉटल्स बहुत सेफ़ हैं, यहाँ वहाँ गिरती नहीं है. तो ये ओवरऑल पैकेजिंग है ट्रैवल मिनी सेट का या डिस्कवरी सेट का. आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस डिस्कवरी सेट. अब ये वाला जो मैंने खोला है, दिस इज़ द हर डिस्कवरी सेट एंड ये कहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर हर. एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है फॉर हर का और उसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये कौन सा है. एंड इसमें 3 परफ्यूम्स हैं. सो उन्होंने टोटल 5 परफ्यूम्स रिलीज़ किए हैं. 2 परफ्यूम्स आर मार्केटेड फॉर विमेन, 2 आर मार्केटेड फॉर मेन, 1 इज़ अ यूनिसेक्स परफ्यूम. तो जब आप मिनी सेट या डिस्कवरी सेट खरीदते हो तो आपको 2 जो विमेन के फ्रेग्रेंसेज है वो मिलेंगे, उसके साथ एक यूनिसेक्स वाला मिलेगा. सिमिलरली जो मेन का खरीदोगे उसमें 2 मेन के परफ्यूम्स मिलेंगे और एक यूनिसेक्स वाला मिलेगा. तो अब पहले सिंस मैंने यही वाला ओपन कर लिया है, लेट्स टॉक अबाउट द परफ्यूम्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड. आप देख सकते हो ना, परफ्यूम्स आधे से ज़्यादा बॉटल्स खाली हो चुकी हैं क्योंकि मैं इनको थरली टेस्ट एंड ट्राई कर रही थी एंड मैंने अपने थॉट्स पूरे कंसोलिडेट कर लिए हैं. सो लेट्स पिक थिंग्स वन बाय वन. सबसे पहले मैं कवर अप करूँगी यूनिसेक्स परफ्यूम को. So let's talk about the first one, which is the unisex perfume that she has, and this is called as Influence. So मैंने अनम का वीडियो देखा था एंड उन्होंने बोला था कि this perfume is all about aqua 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 and this is kind of a perfume which is unisex and everyone will like it and you will not go wrong with this perfume. So जब मैंने इसको ओपन करके पहला स्निफ दिया तो मुझे सिर्फ aqua 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 नहीं लगा ये परफ्यूम. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. ये एक I do agree with her कि ये aqua fresh perfume है, but this is aqua, this is spicy and this is also earthy और green in some way. ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ citrus and aqua notes हैं. इसमें aqua notes हैं, citrus note है, but इसमें बहुत सारे herbal and earthy notes भी हैं.
और कहीं ना इसमें एम्बर नोट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक फ्रेशनेस के साथ साथ एक वार्मथ भी आ रहा है, एंड दैट इज़ वन नोट विच इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर माई नोज। मैं इसका आपको पहले पूरा नोट का ब्रेकअप बताती हूँ, एंड देन आई टेल यू हाउ आई फील अबाउट दिस बुक। तो इसके टॉप नोट्स में यू हैव सिट्रस, सम एरोमेटिक नोट्स एंड एम्बर। द मिडल नोट्स हैज़ लॉट ऑफ लैवेंडर इन दिस। लैवेंडर के साथ साथ कुछ कुछ फ्रेश स्पाइसी नोट्स प्रेजेंट है इसमें। बेस नोट्स में बहुत ही अर्दी, हर्बल, वुडीनेस काफ़ी प्रोमिनेंट है इस फ्रेग्रेंस में एक्चुअली। अर्थीनेस भी बहुत ज़्यादा है। एक ऐसे गीली मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, थोड़ा सा इसमें वो वाला टच भी है, थोड़ा सा गीली मिट्टी की खुशबू वाला टच है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि इसमें फ्रेश ओपनिंग है सिट्रस की, लेकिन उसके साथ एम्बर आ रहा है जो मेरे नोज़ को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि फ्रेश सिट्रस नोट मिक्सड विथ एम्बर विच इज़ अ वार्म नोट इज़ स्लाइटली मेकिंग दिस अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड बेसिकली। बट ये अच्छी लगी मुझे फ्रेग्रेंस, मतलब उतनी, वैसे आई एम नॉट इनटू फ्रेश फ्रेग्रेंसेस, बट दिस इज़ नॉट वेरी वेरी फ्रेश, इट इज़ फ्रेश वुडी एंड अर्दी फ्रेग्रेंस। यस, सो इसमें लैवेंडर काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहा है। इट्स वेरी कामिंग एंड सॉर्ट ऑफ प्लीजिंग एंड सॉर्ट ऑफ it just helps in calming down the nerves. So basically मुझे ये काफ़ी एक फ्रेश, सिट्रसी, कामिंग, अर्दी, हर्बल वाइब वाला परफ्यूम लगा। डेफिनेटली अ गुड यूनिसेक्स, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि इट इज़ अ यूनिसेक्स परफ्यूम, बट इट इज़ मोर प्रेफरेबल फॉर अ गाय टू वेयर दिस इंस्टेड ऑफ मी। मैंने अपने ऊपर जब ये टेस्ट एंड ट्राई करके देखा, मेरे बॉडी केमिस्ट्री के साथ इट वॉज स्मेलिंग गुड, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट वॉज स्मेलिंग गुड, बट इट वॉज नॉट स्मेलिंग amazing, and that's what I was looking for in this perfume. Like how she mentioned that you will not go wrong with this, kind of agree with her, because this is a unisex perfume, a very safe blind buy, and this is perfect for office wear, even for women and men both. It is perfect for office wear. It's not going to offend anyone, and इसका ड्राई डाउन काफ़ी earthy है, so it settles down into a very nice lavender earthy kind of something. and इसका थोड़ा सा फील मुझे एक लैवेंडर ऑयल या डिफ्यूज़र ऑयल की तरह भी लगता है, but I like it. I don't love it, but I don't hate it either. It is in the likable category. Will I purchase a huge, like the bigger, not huge, will I purchase the 100 ml bottle of this? I will not, because I think the other perfumes in her set are better off. So I'm going to focus on that. This one is the only aqua fresh fragrance that is available. सो इस पर्टिकुलर परफ्यूम के लिए आई विल डेफिनेटली से कि इट इज़ द काइंड ऑफ परफ्यूम जो आप डे टाइम में बहुत ईजीली रॉक कर सकते हो, बीट एनी सीज़न। नाइट टाइम के लिए ये उतना अच्छा नहीं लगा मुझे, डे टाइम के लिए ही मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं उसी के लिए रिकमेंड करूँगी। एब्सोल्युटली नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस वन, एनी वन एनी टाइम कैन यूज़ दिस वन। सो एंड इसका परफॉर्मेंस इज़ डिसेंट। ये मेरे स्किन के ऊपर इट लास्टेड फॉर अराउंड 5 hours, एंड मेरे कपड़ों के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर इट लास्टेड फॉर अराउंड 6.5 hours. So that's about the first perfume influence. Let's move on to the next perfume. And by the way, all the 100 ml bottles are priced for 16.99 rupees. I just wanted to mention that. So the next perfume that I have is called as June, and according to Anam, this is basically her in a bottle. So she likes these floral fragrances, light florals that don't induce headache. So that's her choice of fragrances, and this one has a beautiful opening. I absolutely love the opening of this one. ये वाला एक बहुत ही प्यारा फ्लोरल, स्पाइसी, वार्म, काइंड ऑफ बाल्समिक, थोड़ा सा फ्रूटी, एंड इज़ अ पाउडरी वुडी फ्रेग्रेंस। बेसिकली फ्लोरल, स्पाइसी, वुडी, ये 3 मेन कैटेगरीज हैं इसके। इसकी ओपनिंग बहुत सुंदर है। इसकी ओपनिंग बहुत ही पर्पल पिंक फ्लावर्स वाली ओपनिंग है इसमें, एंड it has some spiciness in the opening. इसके हार्ट नोट्स में फ्रूटी नोट्स हैं, and it has some balsamic notes on it.
And the best part is that this is so well blended कि when I'm sniffing this, I'm not able to finger point कि इसमें ये note present होगा. That is the beauty of the blend that is there in this. काफ़ी अच्छा blend है ये. And उसकी वजह से मुझे identify नहीं हो पा रहा कि ये कौन सा fruit है, but it has a very sweet fruitiness in the heart note. And the base note is mostly powdery and a lot of wood, like a lot of wood. So this one is a nice floral white, not white floral, pink purple floral spicy and woody fragrance. Now this is the kind of a fragrance which is very sophisticated. It is long lasting. It lasts for around 7 to 8 hours on me, and iska projection decent hai. It forms a perfume bubble near me. It's not very projecting, but it projects for around 30-35 minutes. It is amazing to wear daytime and also transitioning it to nighttime. So I think ये daytime and nighttime wear दोनों के लिए बहुत अच्छी है. Depending on the number of sprays that you use, आप इसका concentration दिन में थोड़ा कम रख के रात को थोड़ा ज़्यादा करके यूज़ कर सकते हो. एंड ओवरऑल ये वाला मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ वर्दी ऑफ परचेसिंग अ फुल बॉटल. काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये. एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस which has the potential to become a signature scent for someone who is into floral spicy fragrances. I think they will really enjoy this one. थोड़ा सा mature है ये, तो I will recommend 20 plus women to wear this one. I feel that this is quite feminine, so I don't recommend men using this. I don't find this unisex basically. And I love the juice color in this. Like it just kind of shows that it basically has no meaning. Like they have not used any artificial colors, so whatever notes they have used in here, the color is natural according to the notes. But ऐसा myth है कि the darker the juice is, the heavier it is. But it's not always true. But I like the juice color in this one. I like the spiciness in this. It is a very strong spicy floral. So the third bottle from the Her Discovery set is called as Evolution, and this represents the phase in women's life of how they evolve with time. So I love the name of this one. Evolution is a gorgeous name for a perfume, and the significance and meaning of it is also beautiful. This one is a very gorgeous white floral fruity woody fragrance. It doesn't seem very complicated. सिंपल परफ्यूम लगता है, बट अप्लाई करने के बाद ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. सो आई लाइक व्हेन अ परफ्यूम चैलेंजेस मी एंड माई नोज इन दैट वे. बहुत ब्यूटीफुल ओपनिंग, इसकी ब्यूटीफुल ओपनिंग भी है. और इसका ड्राई डाउन तो आई लव्ड द ड्राई डाउन ऑफ दिस वन. इतना प्यारा वेनिला वुडी डाउन ड्राई डाउन है इसका. सो दिस वन ओपन्स अप विथ वाइट फ्लोरल्स. Yes, this has a lot of white florals in it, and it just blends into this middle notes of vanilla and fruity accords, and then it has a base note of woodiness. I personally would have loved if the vanilla was accompanied with something like sugar or maybe caramel, because I just feel that this lacks certain bit of sweetness to it. Like the sweetness is there, but it is less. It's not very sweet, it's not less sweet, it is somewhere in between. It is balanced very well, but I miss the sweetness more. Like I would have preferred if the sweetness was more, even if it was vanilla. More vanilla should have been present here is what I feel. That is just a personal preference. If I want, I can layer it with a vanilla perfume to get the kind of perfume that I'm looking for. बट ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल, इसका भी ड्राई डाउन थोड़ा सा पाउडरी है. द वाइट फ्लोरल्स इज़ सुपर वेल ब्लेंडेड. आपको बिल्कुल भी वो गढ़ता हुआ जैस्मिन ऑब्जर्व नहीं होगा. बहुत वेल ब्लेंडेड परफ्यूम्स हैं ये. तीनों परफ्यूम्स बहुत वेल ब्लेंडेड है. तो हर कैटेगरी के इन तीनों परफ्यूम्स में से मुझे एवोल्यूशन सबसे अच्छा लगा. ये वाला ये मेरे ऊपर 8 घंटे से ज़्यादा चल जाता है. आई लव द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन. इट प्रोजेक्ट्स ऑल्सो फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर, एंड उसके बाद ये ना धीरे 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 ऐसे विस्प की तरह आता रहता है. तो ये बेसिकली धीरे धीरे प्रोजेक्ट होता रहता है थ्रू आउट. इसकी जर्नी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. लाइक फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द परफ्यूम टिल द एंड, टिल इट फेड्स अवे, द जर्नी इज सो गॉर्जियस, एंड यू गेट द डिफरेंट फेजेस वाले विस्प. स्टार्टिंग में थोड़े फ्लोरल विस्प आएंगे, फिर आपको थोड़े से फ्रूटी विस्प आएंगे,
फिर थोड़े से वेनिला, फिर वुडी। आई लव द जर्नी ऑफ दिस वन। सो ये ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये भी उसी टाइप का परफ्यूम है जो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो और आप रात में भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एग्जैक्टली वही किया था, मैं पूरे दिन यही परफ्यूम लगाई थी और रात को मैंने 3-4 बार और, मतलब 3-4 स्प्रिट्स मैंने और मार लिए इसको थोड़ा और हैवी करने के लिए। तो मैंने रात को भी यही परफ्यूम लगाया एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स व्हेन आई वोर दिस वन। So evolution out of the three is the compliment getter. It's compliment getter, it is stronger and somehow it is more balanced and it performs also well. So मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मेरे रिव्यू के हिसाब से आई एम रेटिंग एवोल्यूशन टू द हाइएस्ट एंड आई थिंक दिस इज़ द वन दैट आई विल परचेज अ बिगर बॉटल फॉर। सो इसका 100 ml का बॉटल परचेज करने में मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई लव्ड द परफ्यूम ऑन मी एंड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन। सो बिफोर आई मूव ऑन विद द हिम डिस्कवरी सेट, मैं एक बार इसी के प्रॉस एंड कॉन्स समराइज करना चाहती हूँ ताकि बाद में दोबारा ना करना पड़े। And if you are here only to listen to the her discovery set का conclusion, then you may end the video here itself. तो इसकी bottles जो हैं, each 100 ml bottle is for 16.99 and she has 5 perfumes in this. I would have loved to have 50 ml bottles option also instead of getting 100 ml, क्योंकि 100 ml is for 1700 which is slightly on the higher side. अगर इसी का 50 ml होता तो ऑलमोस्ट आधे प्राइस में मुझे मिल जाता, विच वुड हैव बीन अंडर 1000. दैट वुड हैव डेफिनेटली स्टिक टू माई बजट। तो उस हिसाब से मैं थोड़े 2-3 बॉटल्स खरीद सकती थी अगर 50 ml का होता तो मेरा ये प्रॉब्लम तो ओवरऑल सारे परफ्यूम्स के साथ है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी सेट फॉर हर। सेकेंड वन इज दैट आई मिस अ sticky sweet gourmand perfume in this set. Usually for her, there is one category of florals, there is one category of aqua, one category of sweet, and one category of स्पाइसीनेस। सो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ्लोरल एंड स्पाइसीनेस एंड एक्वा ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ब्लेंड होके हमें तीनों परफ्यूम्स में मिल गए। बट आई रियली मिस्ड आउट ऑन अ गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस इन दिस कलेक्शन एंड आई एम समवन who loves wearing gourmand fragrances apart from florals. तो florals का need मेरा पूरा हो गया इसके साथ, but I feel that the discovery set for her is missing that sticky, sweet, caramel, sugar, candy-like perfume. One gourmand perfume was needed, which I feel is missed out. But who knows, she may release them later. ओवरऑल मुझे ऐसा लगा हर सेट का कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छा है, बट एवोल्यूशन का परफॉर्मेंस जस्ट ओवरटुक ऑल द अदर। तो मुझे बाकी के दो का परफॉर्मेंस उतना पसंद नहीं आया जितना मुझे एवोल्यूशन का लगा। सो अकॉर्डिंग टू माई चॉइस एवोल्यूशन इज़ फर्स्ट, सेकेंड वन इज़ जून एंड द थर्ड वन इज़ इन्फ्लुएंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिम सेट। सो द पैकेजिंग फॉर द हिम सेट इज़ एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पे हिम फॉर हिम लिखा हुआ है तो मैं पूरा पैकेजिंग के बारे में अब बात नहीं करूँगी। वील डायरेक्टली जम्प इनटू द परफ्यूम्स विच आर सिटिंग राइट हियर। तो इसमें सबसे पहले पिक करते हैं ईगो। आई एम जस्ट गोइंग टू स्प्रे सम ऑफ द परफ्यूम ईगो हियर बिकॉज I love this perfume. Now this is actually marketed for men's perfume set and this one is called as Ego. And मैंने जब ये फर्स्ट टाइम अपने ऊपर लगाया था, I fell in love with this perfume and I was like, why is it not there in the her perfume set? तो मुझे एक्चुअली में ये वैसे marketed for men है, but I felt that this was kind of unisex. Any perfume could be a unisex basically. I find this one to be unisex. So this one has a very gorgeous sweet opening because it has honey in its opening. This one has honey mixed with some sweet white florals. I love this combination. This honey in here in the top note is amazing. Then it moves into this citrusy, musky and caramel note. तो ये honey से start होते हुए it comes to caramel and there is a very beautiful transition in this. It is well blended, okay? You will not get any screechy edges here. There's a very beautiful blend from honey to caramel and the musk notes in here.
एंड सिट्रस इज एक्चुअली अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी इन दिस, क्योंकि इसके जो टॉप नोट्स हैं विद हनी एंड वाइट फ्लोरल्स, अचानक से कैरमल के साथ सिट्रस बहुत कम फ्रेग्रेंसेस में देखने मिलता है. सो आई जस्ट दैट two different notes in one category is something which is very challenging for me. So citrus and caramel and musk are sitting in the hard notes. Then it has some, again, some floralness. Then it has patchouli and it also has woodiness to it. This perfume is good. I mean, I find it unique. I find it different. I find it that it is not a very common combination of notes, especially the hard notes. I mean, the way the citrus is blended with caramel, that's very contrasting, and it's beautiful also, and it's different also. I think that is what makes this perfume different. Also, it also has honey. Honey, it's not very prominent, but you will get the note of honey. Like in the top note, you will get it. And it also has a certain amount of soapiness to it. I mean, it is sexy, but it is also slight bit of soapy fragrance. So this one overall is a nice, sweet, floral, citrusy, sweet, woody fragrance for men, and I feel that it is unisex, so it is also for women. Given a chance, I will actually buy a full bottle of this one because I like the uniqueness in this. So अभी तक में जो 5 fragrances हैं उसमें से I think ego and evolution, these two have my heart. Now this one आई डेफिनेटली फील कि ये एक इवनिंग या नाइट टाइम वेयर के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस है. हालांकि दिन में भी आप इसको इजीली कैरी ऑफ कर सकते हो क्योंकि इसमें वाइट फ्लोरल्स और सिट्रस भी है. बट हाँ, वही है, नंबर ऑफ स्प्रेज से आप कंट्रोल कर सकते हो डे से नाइट का ट्रांजिशन. आई सी दिस एज अ वेरी गॉर्जियस डेट नाइट सेंट, and I also see this as a regular office wear scent as well. So overall I think I really like this. I even like the clean soapy vibe that it has in the dry down. तो मुझे इसका ड्राई डाउन भी काफ़ी पसंद है. ये मेरे ऊपर फिर से 6 से 7 घंटे तक चल जाता है. लॉन्जिविटी अच्छी है, प्रोजेक्शन उतना नहीं है, सियाज उतना नहीं है, बट ओवरऑल आपको दिन भर में छोटे छोटे विस्प इसके भी आते रहेंगे, जस्ट लाइक एवोल्यूशन. तो इसका परफॉर्मेंस एंड एवोल्यूशन का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है. So the last perfume that I want to talk about is called as Second Chance. Now, Second Chance is, according to Anam's video, Second Chance is closest to her. She even shed a tear because she was very emotional while she was trying to explain this perfume. And this is the perfume that her dad likes the most, and he, for honoring his name and for his love for perfumes, she has named this perfume as a Second Chance because he owned a shop which was called a Second Chance. So I really like the personal touch that she has given to her products. Like I think in the lipsticks she had her lipstick shabbo dedicated to her mom, and in perfumes she has this Second Chance dedicated to her dad. So this is the personal story behind this name being Second Chance. Now let's move on to how this perfume is. Now, to be blatantly honest, this is the most challenging perfume for me in these entire sets. Out of the 5 perfumes that I have discussed with you today, this one is the most challenging, and it took me very long time to like it. तो मैंने इसको अपने स्किन पे लगाया था. फर्स्ट आई टेस्टेड ऑल दीज परफ्यूम्स ऑन माई स्किन. नेक्स्ट डे द टेस्ट वॉज ऑन द क्लोथ्स एंड सो ऑन. सो मैंने इसको अपने स्किन पे लगाया था. मैं रात को लगा के सोई. मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लग रहा था इसको लगा के, मतलब एक थोड़ा सा हेडेक सा आ रहा था. ये एक, पहले बताती हूँ कि फ्रेगरेंस किस बारे में है. ये एक काफ़ी स्पाइसी, वुडी एंड अर्थी, हर्बल, एकदम वैसी वाली फ्रेगरेंस है. तो इसको लगाकर जब थोड़ी देर मैंने इसको सेटल होने दिया, तो जो एक बिटरनेस होता है ना, ये मेरे स्किन के ऊपर थोड़ा सा बिटर फील हो रहा था. मतलब मैं जितनी बार भी इसको स्निफ कर रही थी, आई वाज लाइक कुछ कड़वा है, कुछ कड़वा सा आ रहा है, इसमें सीडार वुड बहुत ज़्यादा है या कुछ तो है.
कुछ तो कॉम्बिनेशन गड़बड़ है इसमें, मुझे बहुत हर्बल, बहुत ऐसे नीम का जो कड़वापन होता है, नीम के पत्ते का, नीम के बार्क का, उसमें वुडीनेस भी है, उसमें हर्बलनेस भी है, उसमें एक वो हमाम सोपी वाइब भी है, और उसमें एक बिटरनेस है। ये बिल्कुल मुझे वैसा लगा था, थोड़ा सा वुडी बिटर। देन आई लेट इट सिट ऑन माई स्किन, और मैंने इसको टेस्ट किया, अच्छे से ट्राई किया, मुझे इसका ड्राई डाउन फिर डाइजेस्ट होने लग गया। मतलब आई वाज लाइक हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स नॉट पर्सनली मेंट फॉर मी बट आई कैन स्टिल वेयर इट। देन आई पुट दिस ऑन माई क्लोथ्स, फिर से मुझे वही बिटरनेस वाला फील हुआ। मुझे कहीं ना कहीं आई एक्चुअली थॉट कि इसमें शायद लेदर का नोट होगा, बिकॉज इट हैज़ दैट it has that fresh leather jacket wala feel. That's exactly what it feels to me. Like जब आप एकदम एक क्रिस्प लेदर जैकेट को पहली बार पहनते हो, तब जो आपको फ्रेग्रेंस आती है, इसमें वो थोड़ा सा एनिमलिटिक मैनली लेदर लाइक फील है इसका। तो इसका जो ओपनिंग है, it opens up with this aromatic spicy notes along with some citrus freshness. The hard note is a woodsy. It's very strong woodsy. I think it is cedar wood because it has this cedar wood vibe to it. मुझे पहले ऐसा लगा था कि इसमें शायद वेटिवर भी है, थोड़ा सा एक ग्रीन हर्बलनेस जो आ रहा है, but it does not have vetiver. But it does not have vetiver to it. Then it has some musky green notes. To me, those green notes feel literally like neem. I think that is the one which is making this bitter and leather like. I'm not sure, but I think it is what that. तो ये वाला एज यू कैन सी, ये मैंने सबसे कम यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये बहुत चैलेंजिंग लग रहा था एक्सेप्ट करने में मेरे स्किन के ऊपर। इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, इसमें कोई फ्लोरल टच नहीं है, इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी फेमिनिटी एलिमेंट्स नहीं है। दिस इज़ अ वेरी रफ कोर मैस्कुलाइन animalatic leather like perfume, very herbal, very woody, very raw. It's a very raw perfume is what I feel. So this one is, I will recommend this to men who can like carry that leather wala fragrance, because I think this feels like a slightly bold fragrance also. Maybe I don't find this a safe blind buy is what I'm trying to say. So maybe men who are interested in unique fragrances with a hatke wala blend, I think you can definitely try this one. Of course, it's a unique fragrance, but sadly on my body chemistry doesn't go well. It also lasts decent, again 6 to 7 hours in general, but I did not enjoy this the most how I wanted it to be. It also has some earthy vibe to it, but overall ये मुझे बहुत पसंद नहीं आया. Third perfume in the men's discovery set is again the unisex one, Influence. वो मैं already explain कर चुकी हूँ, so I won't go through it again. Overall, let me just summarize everything that I feel. In general, these perfumes last for 6 to 7 hours, so the longevity is good. The sillage depends from perfume to perfume, वो मैंने cover कर लिया आपने individual इसमें. And overall मुझे इसमें वही एक चीज़ फील हुई कि हर के परफ्यूम्स में आई वॉज मिसिंग दैट स्वीट टूथ वाला फ्रेग्रेंस. सो इन द मेंस परफ्यूम्स मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है, बट इट डज नॉट हैव दैट किक ऑफ अ सिट्रस इन इट. मतलब जो एक ब्लू एक्वाटिक किक मिलना चाहिए था ना मुझे, वो मुझे नहीं मिला एक जो टिपिकल मेंस परफ्यूम में रहता है, क्योंकि वो लैवेंडर और हर्बलनेस की वजह से इन्फ्लुएंस में दैट किक इज़ मिसिंग, ऐसा मुझे लगा. सो if out of all the 5, if I have to purchase 2, they will probably be Evolution and Ego. And if I have to purchase 3, then it will be Evolution, Ego and June. These 3 are the only perfumes that I would recommend purchasing
full bottle of. I would not recommend. I would purchase a full bottle of it. Rest of the perfumes are okay. I did not enjoy them as much. So that brings us to the end of the video. I hope कि आपको ये video पसंद आया होगा, and based on my review you will be able to judge which perfume you need to buy. And I have tested and tried. I enjoyed the process of doing so. I hope she comes up with more beautiful blends, more warm amber perfumes, more of the firewood kind of perfumes, like जिसमें थोड़ा oud हो, जिसमें थोड़ा थोड़ा सा sexy feel हो कुछ perfumes में, थोड़े वैसे bold perfumes लेकर आए is what I'm hoping. So let's, finger crossed, all the best to you, Anam. I hope that you do that and bring us more variety in Indian perfumes. We definitely need more of these. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. Please support my channel by clicking the subscribe button, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.